1. Confrontation, noun. झगड़ा, मुकाबला करना. A hostile or argumentative situation or meeting between opposing parties. 2. Rhetoric, noun. शौकत अल्फाज, लिसानी, इल्म बयान. The art of effective or persuasive speaking or writing, especially the exploitation of figures of speech and other compositional techniques. 3. Inimical, adjective. बेमुरव्वत, नामेहरबान, मुआनिदाना. Tending to obstruct or harm. 4. Predominantly, adverb. ज़्यादा कुव्वत से, गालिब तौर पर, ज़बरदस्ती से. Mainly, for the most part. 5. Bitter, adjective. कड़वा, तल्ख. Having a sharp, pungent taste or smell, not sweet. 6. Invective, noun. दुश्मनामेज़, गाली गलो. Insulting, abusive, or highly critical language. 7. Denigrate, verb. अहमियत कम करना, खत्म करना, मंसूख करना. Criticize unfairly, disparage. 8. Malfeasance. बदउनवानी, जुर्म, नुकसानदेह रवैया. Wrongful conduct by a public official. 9. Dominate, verb. गालिब होना, हुकूमत करना, तसल्लुत हासिल करना. Have power and influence over. 10. Salvage, verb. किसी खतरे से बचाने का अमल. Rescue a wrecked or disabled ship or its cargo from loss at sea. 11. Perpetual, adjective. हमेशा रहने वाला, दायमी, मुस्तकिल. Never ending or changing. 12. Misery, noun. बदनसीबी, तकलीफ, ख्वारी. A state or feeling of great physical or mental distress or discomfort. 13. Stance, noun. मौक़िफ़, हालत, कैफियत, नुक्ता नज़र. The way in which someone stands, especially when deliberately adopted, as in cricket, golf, and other sports, a person's posture. 14. Combative, adjective. लड़ाका, मुतनाज़ा, झगड़ालू. Ready or eager to fight or argue. 15. Coherent, adjective. माकूल, मंतिकी, तसलसल. Of an argument, theory, or policy, logical and consistent. 16. Ratify, verb. तौसीक, जायज़ करार देना. Sign or give formal consent to a treaty, contract, or agreement, making it officially valid. 17. Adversity, noun. आफत, बदकिस्मती, मुसीबत, नहुसत. A difficult or unpleasant situation. 18. Solidarity, noun. यकजहती. Unity or agreement of feeling or action, especially among individuals with a common interest, mutual support within a group. Lost in the noise of politics and intensity of power tussles today is any serious focus on the issues that are critical to the country's future. In the political confrontation raging today, the preoccupation of political leaders is with outmaneuvering opponents, not explaining how they propose to solve national problems or what their parties stand for. This at a time when the country's multiple challenges are crying out for solutions and answers. Above all, a polarized environment marked by constant exchange of toxic rhetoric makes it impossible to evolve much-needed consensus on key national issues. It also creates an atmosphere inimical to the generation of new ideas. The political discourse today consists predominantly of bitter invective and aggressive rhetoric along with unceasing efforts by political leaders to denigrate opponents. Instead of debating public policy, much of the political conversation involves diatribes and allegations of malfeasance and venality hurled by political leaders against one another. This has spawned a form of issue-less politics, where instead of the country's challenges being seriously discussed, political narratives are reduced to deriding rivals. Perhaps because parties no longer have any programs, shallow narratives dominate politics. No political party has offered a credible vision of the country's future, much less outlined a strategy to reach that destination.
Take, for example, the response of both government and opposition figures to the two key challenges faced by the country today: an unprecedented economic crisis and the security threat from the renewed surge of militant violence. On the first, public exchanges have taken the form of who is responsible for pushing the economy into the critical ward. In other words, a blame game has been underway rather than an informed discussion of what Pakistan needs to do to salvage the economy on an enduring basis. The government has said it will take all the policy actions needed to reach an agreement with the IMF. But it has not spelled out any economic plan beyond securing the fund bailout, which is necessary but not sufficient, for a sustainable way out of the country's perpetual fiscal and balance of payments crisis. The IMF deal can only provide temporary relief. It should be an initial part, not substitute for a broader homegrown economic strategy to chart a path to growth. Tellingly, PMLN's coalition partners, especially PPP, have shown little interest in saying anything on the economic situation, conveying the impression that they have nothing to do with how the economy is being managed. Meanwhile, opposition representatives have been castigating the government for taking steps to satisfy the IMF, saying they will compound people's hardship and misery. But they have not offered any alternative or their own vision of how the economic crisis should be addressed. Political leaders should be focusing on meeting the country's challenges, not undermining opponents. A similar stance was on display in the response to militant violence. Both blamed each other for the current wave of terrorism sweeping across Khyber Pakhtunkhwa. Leaders of the ruling coalition at the center accused Imran Khan and his KP government for pursuing policies that encouraged the return of militant activities and held the provincial government responsible for not acting against the TTP. Khan and his party leaders, on the other hand, claimed the province was peaceful when PTI was in power at the center. They defended resettling TTP fighters in the province and said it was, in any case, the responsibility of federal agencies to deal with terrorism. Imran Khan also linked the surge in violence to his removal from power. For his part, Prime Minister Shehbaz Sharif blamed the KP government for the surge of terrorism by failing to equip the police and civil armed forces to fight militants. He asked where funds allocated to the province for this purpose went. Meanwhile, the much-postponed all-parties conference announced by him seemed little more than a cosmetic exercise when the atmosphere was vitiated by the arrests of opposition figures and the combative attitude adopted by the government against PTI and its allies. Repeated postponement of the APC showed a lack of seriousness. A serious move should involve holding a conference after and not before fashioning a coherent counter-militancy strategy, which is still lacking. Conferences are forums to ratify or tweak strategies, not frame them. Another aspect of the poverty of political discourse is how platitudes and clichés are what some political leaders think is enough to convey their position in key policy areas. This again reflects the fact that their parties lack any program, policy plan, or aims. Banal pronunciations by power holders are reported daily by the media. Examples include, Pakistan will be the investment center in the region. We need to boost exports and productivity. We will protect the poor from inflation. We are committed to provide education for all. Education is the key to progress. Terrorism is Pakistan's foremost problem. National unity is needed to fight terrorism, and so on. These statements of the obvious say nothing about what the actual policy goals are, and more importantly, how they are to be achieved. It is as if mouthing platitudes will magically translate into policy and accomplish goals. If it isn't platitudes, it's exhortations, calling on people to unite, make sacrifices, or show forbearance in the face of national adversity. Again, these are statements made in a policy vacuum. Platitudes are not a substitute for strategy any more than exhortations are for policy. People have much higher expectations of their leaders at times of crisis. They seek a clear and credible direction, assurance that national problems will be competently addressed, and above all, solidarity among public representatives so that they are seen to be working together to responsibly and purposefully address challenges.
If all the public hears are allegations that the other side is unfit to govern and sees no efforts to discuss and act on issues of concern to them, it erodes trust in both politicians and the political system. Democracy is undermined when people see politics as just a power struggle shorn of public purpose. The writer is a former ambassador to the US, UK, and UN. Published in Dawn, February 13, 2023. Subscribe our channel. Dawn Vocabulary. youtube.com/@dawnvocabulary. आज सियासत के शोर और इक़्तिदार की कशमकश की शिद्दत में गुम होकर उन मसाइल पर संजीदगी से तवज्जो मरकूज की जा रही है जो मुल्क के मुस्तकबिल के लिए अहम हैं। आज जारी सियासी महाज आराई में सियासी रहनुमाओं की मसरूफियत मुखालिफिन से ज़्यादा है और वो इस बात की वजाहत नहीं कर रहे कि वो कौमी मसाइल को किस तरह हल करना चाहते हैं या उनकी जमातें किस मकसद के लिए खड़ी हैं। ये एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब मुल्क के मुताद्दिद चैलेंजेस हल और जवाबात के लिए चीख रहे हैं। सबसे बढ़कर ये कि जहरीले बयानात के मुसलसल तबादले की वजह से पोलराइज्ड माहौल अहम कौमी मसाइल पर इंतहाई ज़रूरी इत्तेफाक राय पैदा करना नामुमकिन बना देता है। ये एक ऐसा माहौल भी पैदा करता है जो नए ख्यालात की नस्ल के लिए नुकसानदेह है। आज की सियासी गुफ्तगू में बुनियादी तौर पर तल्ख इश्तिआल अंगेज और जारहाना बयानबाजी के साथ साथ सियासी रहनुमाओं की जानिब से मुखालिफिन को बदनाम करने की मुसलसल कोशिशें भी शामिल हैं। अवामी पॉलिसी पर बहस करने के बजाय ज़्यादातर सियासी गुफ्तगू में सियासी रहनुमाओं की जानिब से एक दूसरे के खिलाफ बदसलूकी और बदतमीज़ी के इल्ज़ामात शामिल होते हैं। इसने मसाइल से पाक सियासत की एक शक्ल को जन्म दिया है जहां मुल्क के चैलेंजों पर संजीदगी से बात करने के बजाय सियासी बयानिए को हरीफों का मजाक उड़ाने तक महदूद कर दिया जाता है। शायद इसलिए कि पार्टियों के पास अब कोई प्रोग्राम नहीं है, सियासत पर ओछे बयानिए हावी हैं। किसी भी सियासी जमात ने मुल्क के मुस्तकबिल के बारे में कोई काबिल एतमाद विजन पेश नहीं किया है। इस मंजिल तक पहुंचने के लिए कोई हिकमत अमली बहुत कम बयान की है। मिसाल के तौर पर आज मुल्क को दरपेश दो अहम चैलेंजों पर हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ दोनों के रद्द-ए-अमल को ले लीजिए। एक बेमिसाल माशी बहरान और अस्करियत पसंदों के तशद्दुद में इजाफे से सलामती को लाहिक खतरा। पहली बात तो यह है कि अवामी तबादलों ने यह शक्ल इख्तियार कर ली है कि मईशत को नाजुक समत में धकेलने का जिम्मेदार कौन है। दूसरे लफ्जों में, पाकिस्तान को पायदार बुनियादों पर मईशत को बचाने के लिए क्या करने की ज़रूरत है, इस पर बाखबर बहस के बजाय इल्ज़ाम तराशी का खेल जारी है। हुकूमत ने कहा है कि वो IMF के साथ मुआहदे तक पहुंचने के लिए तमाम ज़रूरी पॉलिसी इक़दामात करेगी, लेकिन इसने फंड बेल आउट हासिल करने के अलावा कोई इक्तिसादी मंसूबा नहीं बयान किया है जो मुल्क के दायमी माली और अदायगियों के तवाज़ुन के बहरान से पायदार रास्ता निकालने के लिए ज़रूरी है, लेकिन काफ़ी नहीं। IMF मुआहदा सिर्फ आर्जी रिलीफ फराहम कर सकता है। ये एक इब्तदाई हिस्सा होना चाहिए, न कि तरक्की की राह का खाका तैयार करने के लिए वसीतर घरेलू इक्तिसादी हिकमत अमली का मुतबादिल। वाज़ेह रहे कि मुस्लिम लीग नून की इत्तेहादी जमातों बिलखुसूस पीपल्स पार्टी ने माशी सूरत हाल पर कुछ भी कहने में कोई दिलचस्पी जाहिर नहीं की है और ये तासुर दिया है कि मईशत को किस तरह चलाया जा रहा है, इससे उनका कोई लेना देना नहीं। दरियासना हिज़्ब इख्तिलाफ के नुमाइंदे IMF को मुतमईन करने के लिए इक़दामात करने पर हुकूमत को तनक़ीद का निशाना बना रहे हैं और कह रहे हैं कि इससे अवाम की मुश्किलात और मसाइब में इजाफा होगा, लेकिन उन्होंने कोई मुतबादिला अपना विजन पेश नहीं किया है कि माशी बहरान से कैसे निपटा जाए। सियासी रहनुमाओं को मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निपटने पर तवज्जो मरकूज करनी चाहिए, न कि मुखालिफिन को कमज़ोर करने पर। अस्करियत पसंदों के तशद्दुद के जवाब में भी इसी तरह का मौक़िफ़ ज़ाहिर किया गया था। दोनों ने खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की मौजूदा लहर के लिए एक दूसरे को मोरिद इल्ज़ाम ठहराया। मरकज़ में हुक्मरान इत्तेहाद के रहनुमाओं ने इमरान खान और उनकी KP हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो ऐसी पॉलिसियों पर अमल पैरा हैं जो अस्करियत पसंद सरगर्मियों की वापसी की हौसला अफजाई करती हैं और TTP के खिलाफ कार्रवाई न करने का जिम्मेदार सूबाई हुकूमत को ठहराते हैं। दूसरी जानिब इमरान खान और उनकी पार्टी के रहनुमाओं ने दावा किया कि जब मरकज़ में PTI की हुकूमत थी तो सूबा पुरअमन था।
उन्होंने सूबे में टीटीपी के जंगजुओं की आबादकारी का दिफा किया और कहा कि किसी भी सूरत में दहशतगर्दी से निपटना वफाकी एजेंसियों की जिम्मेदारी है। इमरान खान ने तशद्दुद में इजाफे को इक़्तिदार से हटाने से भी जोड़ा। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने केपी हुकूमत को दहशतगर्दी में इजाफे का जिम्मेदार करार देते हुए कहा कि वो पुलिस और सिविल आर्म फोर्सेस को अस्करियत पसंदों से लड़ने के लिए तैयार करने में नाकाम रही है। उन्होंने पूछा कि इस मकसद के लिए सूबे को मुख्तस फंड्स कहाँ गए। दरियासना उनकी जानिब से ऐलान करदा थल पार्टीज कॉन्फ्रेंस एक कॉस्मेटिक मशक से ज़्यादा कुछ नहीं थी, जब अपोजिशन शख्सियात की गिरफ्तारियों और हुकूमत की जानिब से पीटीआई और उसके इत्तेहादियों के खिलाफ अपनाए जाने वाले जारहाना रवैये से माहौल खराब था। एपीसी के बार बार मुलतवी होने से संजीदगी का फुकदान जाहिर होता है। एक संजीदा अक़दाम में अस्करियत पसंदी के खिलाफ एक मरबूत हिकमत अमली तैयार करने से पहले नहीं बल्कि इसके बाद एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद शामिल होना चाहिए, जिसका अब भी फुकदान है। कॉन्फ्रेंसें हिकमत अमली की तौसीक या तब्दीली करने के लिए फोरम है, न कि उन्हें फ्रेम करने के लिए। सियासी बहस की गुर्बत का एक और पहलू ये भी है कि बाज़ सियासी रहनुमाओं का ख्याल है कि पॉलिसी के अहम शुबों में उनके मौक़िफ़ को वाज़े करने के लिए किस तरह तज़हीक और तज़हीक काफ़ी है। ये एक बार फिर इस हकीकत की अक्कासी करता है कि उनकी जमातों के पास किसी प्रोग्राम, पॉलिसी प्लान या मकासद का फुकदान है। ताकत रखने वालों की तरफ से बनल तलफ़्फ़ुज़ को मीडिया के ज़रिए रोज़ाना रिपोर्ट किया जाता है। मिसालों में शामिल हैं, पाकिस्तान खित्ते में सरमायाकारी का मरकज़ बनेगा, हमें बरामदात और पैदावारी सलाहियत को बढ़ाने की ज़रूरत है, हम गरीबों को महंगाई से बचाएंगे, हम सब के लिए तालीम फराहम करने के लिए पुरज़्म हैं, तालीम तरक्की की किलीद है। दहशतगर्दी पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है, दहशतगर्दी से लड़ने के लिए कौमी इत्तेहाद की ज़रूरत है। और उसी तरह वाज़े तौर पर ये बयानात इस बारे में कुछ नहीं कहते कि असल पॉलिसी अहदाफ किया है, और इससे भी अहम बात यह है कि उन्हें किस तरह हासिल किया जाना है। ऐसा लगता है कि झूठ बोलने से जादुई तौर पर पॉलिसी में तब्दील हो जाएगा और अहदाफ हासिल होंगे। अगर यह तलकीन नहीं है तो उसकी नसीहतें हैं, जिनमें लोगों को मुत्तहिद होने, कुर्बानियां देने या कौमी मसाइब का मुकाबला करने के लिए सब्र और तहम्मुल का मुजाहिरा करने की दावत देना शामिल है। एक बार फिर ये पॉलिसी खला में दिए गए बयानात हैं। तलकीन पॉलिसी के लिए तलकीन से ज़्यादा हिकमत अमली का मुतबादिल नहीं है। बुहरान के वक्त लोगों को अपने रहनुमाओं से बहुत ज़्यादा तवक्कुआत होती है। वो एक वाज़े और काबिल एतमाद समत चाहते हैं, इस बात की यकीन दहानी चाहते हैं कि कौमी मसाइल को मुअस्सर तरीके से हल किया जाएगा, और सबसे बढ़कर अवामी नुमाइंदों के दरमियान यकजहती ताका वो जिम्मेदारी और जान बूझकर चैलेंजों से निमटने के लिए मिलकर काम करते नजर आएं। अगर तमाम अवामी इल्ज़ामात सुनते हैं कि दूसरा फरीक हुकूमत करने के काबिल नहीं है और उनके लिए तशवीश के मामलात पर बातचीत और अमल करने की कोई कोशिश नहीं देखता है, तो इससे सियासतदानों और सियासी निज़ाम दोनों पर एतमाद ख़त्म हो जाता है। जमहूरियत इस वक्त कमज़ोर होती है जब लोग सियासत को अवामी मकासद के लिए महज इक़्तिदार की जिदोजहद के तौर पर देखते हैं। मज़मून निगार अमरीका, बरतानिया और अक़वाम मुत्तहिदा में साबिक़ सफ़ीर हैं। अख़ज़ शुदा बतारीख़ 13 फरवरी 2023। For more videos, subscribe our channel. Dawn Vocabulary. YouTube.com/@dawnvocabulary. Like, subscribe, share and comments.